Hello dear students. Today we start our next experiment which proves this DNA as genetic material. In our previous class we studied this Griffith experiment in which Griffith said that DNA as this genetic material. He performed these experiments on this Streptococcus pneumoniae bacteria on a mice, and they performed so many experiments, and finally he concluded that the DNA is this genetic material, DNA as the transforming principle which is responsible for this transformation. Okay, now in a second experiment we see after 10 years of research in 1944, there are three scientists, there are three microbiologists, that is Avery, McCarty and McLeod, perform an experiments in vitro. In vitro experiments mean outside the body. जो experiment outside the cell, outside the body किया जाता है, उसको in vitro बोला जाता है. Okay, so they perform these experiments in vitro, and first of all they extract the cell from this S strain, S3 type of strain. See here, okay, S3 type of strain, that is this smooth S strain, okay, जो कि heat killed bacteria है. Okay, S strain heat killed bacteria, the mixture which is the extract which is removed from this S strain bacteria, and in that mixture, okay, यहाँ पे एक mixture है जहाँ पे सभी materials यहाँ पे present है. All type of materials which are present in that mixture in this cell extract, that is lipids है, carbohydrates है, protein है, DNA है, RNA है. Okay, so in that mixture, in that cell extract, there are all materials are present now. So first of all, they remove these lipids and carbohydrates with the help of the so many enzymes. There are the so many degrading enzymes. With the help of these degrading enzymes, they remove these lipids and कार्बोहाइड्रेट्स. उन्होंने सबसे पहले क्या किया है, ये मिक्सचर में से उन्होंने सबसे पहले लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को रिमूव किया है. नाउ इन दैट एक्सपेरिमेंट्स, ओके, अभी ये एक्सपेरिमेंट्स में ये एक्सट्रैक्ट में क्या बचा हुआ है, इन दैट एक्सट्रैक्ट देयर आर प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए आर नाउ प्रेजेंट. ओके, ये मिक्सचर में अभी 3 मटेरियल्स प्रेजेंट है जो कि क्या है, प्रोटीन, आरएनएस एंड डीएनएस. सो इन दैट मिक्सचर, इन फर्स्ट मिक्सचर, here there is protein, DNA and RNAs are present. In that mixture they add this protease enzyme. Protease enzyme is this protein degrading enzymes, प्रोटीन डिस्ट्रॉइंग एंजाइम जो प्रोटीन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, डिग्रेड कर देता है. ओके, देयर आर द सो मेनी प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स. सो हियर देयर आर यूज दिस प्रोटीएज एंजाइम्स जो प्रोटीन को यहाँ पे डिग्रेड कर रहा है. इट इज दिस डिग्रेडेटिंग एंजाइम्स विच डिग्रेड, विच डिस्ट्रॉय दिस प्रोटीन फ्रॉम दिस मिक्सचर. नाउ अब यहाँ पे प्रोटीन डिस्ट्रॉय हुआ, मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हियर देयर आर ओनली दिस आरएनए एंड डीएनएज आर प्रेजेंट, एंड इन दैट मिक्सचर दे ऐड दिस लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया. लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया विच इज नॉन वायरुलेंट एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया. Okay, so living R strain bacteria, rough strain bacteria which is non-virulent, which is non-pathogenic bacteria, which is not form this, which is not to develop this pneumonia to this mice. Okay, but here as a result of this mixture, at this result of this experiment, there is transformation is takes place. Transformation is takes place means
living R strain bacteria is now converted into this S strain bacteria. Okay, now this non-virulent living bacteria, it becomes virulent. So there is transformation is takes place, and this transformation means this living R strain bacteria is taken this something from this mixture, and that's why there is transformation is takes place. Means here यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, only this DNA and RNAs are present, and there is transformation is takes place. Okay, now in a second step, okay, in a second mixture, this scientist add in that mixture, they add this RNase enzyme. RNase enzyme is this RNA डिग्रेडेडिंग एंजाइम, जो RNA को डिस्ट्रॉय करता है, RNA को उस मिक्सचर से डिग्रेड करता है, रिमूव करता है. ओके, ये RNAs यहाँ पे ऐड किया गया है. देयर इज दिस एडिशन ऑफ दिस RNase एंजाइम्स, जो कि RNA डिग्रेडेडिंग एंजाइम्स है. Now here there is protein is present, and now DNAs are present. Okay, here RNA is degraded by this RNase enzymes, and in that mixture there is mixing of this live R strain bacteria again. यहाँ पे और से live strain bacteria यहाँ पे ऐड किया गया है. Now this mixture, the result of this mixtures is this transformation is takes place here. Okay, again यहाँ पे transformation form हुआ है, means live R strain bacteria is now converted into this virulent S strain bacteria. Means there is transformation is takes place. या इस मिक्सचर में RNA यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, प्रोटीन प्रेजेंट था और DNA प्रेजेंट था, फिर भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. मीन्स लिविंग R strain bacteria taken the something from this mixture, and there is transformation is takes place. Means living R strain bacteria, it now becomes into this S strain bacteria, which is virulent and pathogenic. Now in third step, okay, in a third step there is this addition of this DNase enzyme. DNase enzyme is this DNA डिग्रेडेडिंग एंजाइम, जो DNA को यहाँ पे डिग्रेड कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस एंजाइम को इस मिक्सचर में ऐड किया गया है. ओके, नाउ व्हाट हैपन हियर? नाउ हियर देयर इज दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट एंड RNAs आर प्रेजेंट. देयर इज no DNase because DNA are degraded by this DNA enzymes. Now in that mixture there is also mixed this live R strain bacteria again. ओके, या इस मिक्सचर में और से लिविंग R strain बैक्टीरिया जो कि नॉन वायरुलेंट है, जो कि नॉन पैथोजेनिक है, वो इसमें ऐड किए गए हैं. नाउ व्हाट हैपेंड? द रिजल्ट, देयर इज नो ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है. लिविंग R strain बैक्टीरिया इट्स नॉट बिकम इनटू दिस S strain bacteria. It only this living R strain bacteria present here. Means here there is no DNA, so there is no transformation. यहाँ पे DNA नहीं है, means no DNA, no transformation. बराबर है, क्योंकि इस मिक्सचर में यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन प्रेजेंट था, है कि नहीं. ये थर्ड मिक्सचर में हियर देयर इज ओनली प्रोटीन एंड RNA आर प्रेजेंट. ओके, DNAs तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, DNA प्रेजेंट नहीं है बिकॉज देयर इज दिस एडिशन ऑफ दिस DNase enzymes, एंड ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ दिस DNase enzymes देयर आर दिस डिग्रेडेशन ऑफ दिस DNA, and that's why there are no DNA, there is no DNA is present, means there is no transformation. Okay, there is living R strain bacteria, it's not become into this S strain bacteria, and all the mices are alive. Okay, so from that experiment it is concluded that only this DNA is this genetic